हेलो दोस्तों, एक और दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने वाला तुर्क निषाद एक्टर एंजन अल्टन ने अपना लाहौर का बल्कि पाकिस्तान का पहला दौरा किया है। ये सिर्फ 2 दिन पर मुहित है। इस दौरे की दावत कुछ मकामी कारोबारी हजरात ने दी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेहमान लाहौरियों की रवायती मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुआ, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मैंने इस दौरे से मुतल्लिक वीडियोस और तस्वीर की एक एल्बम तैयार की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एंजन अल्टन यानी कि जिसने अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा किया है, उसकी फैमिली से रिलेटेड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसकी अपनी पैदाइश जो थी वो दिन है 26 जुलाई 1979 और हाइट इसकी है 1.85 मीटर यानी कि तकरीबन 6 फुट से 1-2 इंच ज़्यादा। इसकी शादी जो है 2014 में हुई थी और इसकी स्पाउस का नाम है नेस्लिसा अल-कोखलार और 2 बच्चे हैं इसके। एक का नाम अमीर अर्स है और दूसरे का नाम अलारा है। First of all, I would like to thank to Mr. Engin Nazan, he is there, and I inform to all of you that मैं उर्दू में बता दूंगा ताकि बाकी जो कुछ लोग हैं वो समझ सकें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारी चौधरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं, उनको आप ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं एंगिन नज़ान साहब को। उस सिलसिले में ये पाकिस्तान आए हैं, तो इसलिए हमारा 1 साल का इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह। और सबसे पहले पाकिस्तान और तुर्की का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ये रिलेशनशिप और एंगिन नज़ान भाई इसके ज़रिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। स्पेशली फुरकान हमीद साहब, डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, उनके बगैर भी ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने बहुत रोल अदा किया। एंड अगेन आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर एंगिन नज़ान ब्रदर, ही इज हियर एंड इंशाल्लाह वी विल गो मोर एंड मोर मैनी इयर्स विद ईच अदर इंशाल्लाह। अच्छा, अब मीडिया के जो कुछ चंद सवाल हैं वो आप कर सकते हैं मिस्टर एंगिन से या मुझसे, जो भी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. İmran Khan'ın attığı story'den bahsediyor. Yeah. I can't hear. It's pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's pleasure to me. Thank you. Thank you. I want to ask after watching you all episodes, most of them, especially you, want to become Artugrull Gazi after watching your wonderful performance in episodes. What message do you want to give your fans in Pakistan who want to become Artugrull Gazi after watching your drama? Yeah. It's huge TV series, and
of course, I know the Pakistani people love the TV series, and it's very honored for us. And it's a good Islamic story, and we know how can I say if it's possible, I can speak Turkish. It's much easier for me, and he can translate for me. All right. I think yeah. Hikayesi gerçekten Müslümanlığın özünü ve insanlığın iyiliğini anlatan çok etkileyici bir hikayeydi ve böyle bir hikayenin içinde olmak benim için tabii ki çok çok önemliydi. Ben ve ekip arkadaşlarım çok emek harcadık ama özellikle Pakistan halkından gördüğümüz bu sevgiden sonra emeklerimizin karşılığını almak gerçekten çok çok keyifli. Why not? Why not? If you have a good story, why not? What do you feel after come to Pakistan? Pakistan'ı nasıl buldunuz, ne hissediyorsunuz ve neler bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Pakistan'a ilk gelişim, o yüzden ve çok fazla dolaşma fırsatım olmadı. Ama Pakistan'ın doğal güzelliklerinden haberdarım. Özellikle Kuş Dağları'nı çok merak ediyorum. Ve diğer tarihi yerleri de gezmek için sabırsızlanıyorum ama sanırım onları bir sonraki seyahatimi beklemek zorunda. Did you enjoy the Lahori food, Pakistani food? He is asking. Yeah. Kaşif'in eşi çok güzel Pakistan yemekleri yaptı dün bize. Gerçekten harikaydı. Biraz spicy ama it's good. Thank you. Tarihte deniliyor ki Lahor'u görmeyene doğmamıştır. Siz de geldiniz artık Lahor'u görmüş oldunuz. Artık doğmuş olduk. He says any word in Urdu, Dil Pakistan, Ja Pakistan. Aynen. Lahore वो कहते हैं Lahore ये सिर्फ कहते हैं Lahore Ne demek o? ये Lahore की भी किसी चीज ये हो Lahore की Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore. Thank you very much. And typically speaking, during the month of Ramadan, last Friday, this was full with the This was the center of peace, interfaith harmony.
So kind. Thank you very much. It's amazing. Really, it's amazing. یہ حضرت شیخ عبداللہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان برادر ملک ہے اور ان کی دوستی پر ہم سب کو ناز ہے یا اللہ اس کو زیادہ مضبوط اور مستحکم فرما اور ہمارے ہندو کے مہمان بھائیوں کا